तो कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलीज़ इंग्लिश एकेडमी में। मेरा नाम है अली और आज जो हम चैप्टर समझने वाले हैं उसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। द कॉप एंड द एंथम ये चैप्टर लिखा गया है बाय ओ हेनरी। इस चैप्टर का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कि जो मेन कैरेक्टर है, वो एक होमलेस मैन है जिसका नाम है सोपी। होमलेस मैन मतलब जिनका कोई घर नहीं होता, कोई स्टे करने की प्लेस नहीं रहती। हमारा जो फर्स्ट सीन है वो स्टार्ट होता है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में, जहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है सोपी। वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है और बार बार वो अपनी जगह चेंज कर रहा है और वो अपने पूरे आजू बाजू में बहुत सारे साइंस देख रहा है सराउंडिंग में। और वो कैसे साइन देख रहा है? विंटर के, ठंडी के। और सबसे पहला साइन उसने क्या देखा? जो बर्ड्स थे वो अपने शेल्टर को छोड़कर दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट्स में जा रहे थे जहाँ पे ठंडी नहीं होगी। और हमारा जो ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, हमारा जो ये मेन कैरेक्टर है, ये भी देख रहा है कि इसके पास कुछ भी ठंड के बचने के लिए नहीं है, तो ये कहाँ पर जा सकता है। और जैसे ही हमारा जो एक मेन कैरेक्टर है वो जहाँ पे बैठा रहता है, उसके पैर के पास एक पत्ती टूट के गिरती है और उसको इससे समझ में आता है कि ठंडी का मौसम बहुत ही जल्दी करीब आने वाला है। और वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, मेडिसिन स्क्वायर के आसपास जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब वुलन क्लोथ्स, स्वेटर्स, बूट्स और ब्लैंकेट्स, वो सारी चीज़ें जमा कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को गर्म रख सके ठंडी के मौसम में। बाहर की कंट्रीज़ में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और दिल्ली में जैसे रहती है वहाँ पे तो वो स्टार्टिंग रहती है, उससे भी -डिग्री में चला जाता है कभी कभी टेम्परेचर तो। और सोपी जो है वो एक होमलेस पर्सन है, उसके पास कोई घर नहीं है, तो वो क्या करता है, पिछले कुछ हफ्ते या पिछले कुछ रातें उसने कहाँ पे गुजारी थी? उसने उस एक पार्क की बेंच पे गुजारी थी और उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी क्योंकि ठंडी का टाइम था। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि वो विंटर के लिए क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। और वो सोच ही रहा था कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे थे ताकि वो 3 महीना कहीं पर घूम के आ सके। बट हमारा जो ये होमलेस था, हमारा जो ये होमलेस कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपने कपड़े ही खरीद ले, तो वो दूसरी जगह पे क्या ही जाएगा। तो वो क्या सोचता है कि इससे अच्छा वो क्या करे, वो 3 महीने प्रिजन में गुजार ले, क्योंकि अमीर जो हैं वो सब तो दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं घूमने के लिए जहाँ पे ठंडी नहीं हो। बट हमारा कैरेक्टर जो है वो क्या है, थोड़ा सा उसके पास पैसे की तंगी है, वो होमलेस है। तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं 3 महीने जेल में गुजार देता हूँ। सॉरी। अब विंटर सीजन जैसे ही आता है 3 मंथ के लिए, तो उसके दिमाग में चलता है कि क्यों ना वो 3 महीने क्या करे, जेल में बिता दे। क्योंकि जेल में उसके पास क्या रहेगा, एक अच्छा खाना रहेगा, मतलब उसको अच्छा खाना मिलता रहेगा, एक अच्छा बेड मिलेगा 3 महीने के लिए, और उसको क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी पुलिस वालों की, क्योंकि 3 महीने वहाँ पे उसको क्या होगा, कोई भी भगाएगा नहीं। और वो जो अमीर लोग हैं, वो जो पैसे वाले लोग हैं न्यूयॉर्क सिटी के, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं विंटर सीजन के लिए। जैसे कि वो लोग फ्लोरिडा जा सकते हैं, मेडिटेरियन सी जा सकते हैं और दूसरी जगहों पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं। बट हमारा ये जो सोपी है होमलेस, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये क्या करेगा, तो ये सोचता है कि सबसे अच्छा है, एक जगह है ब्लैकवेल, वो एक आइलैंड है, तो जहाँ पे ये प्रिजन है, जहाँ पे सोपी जाने का सोचता है। तो क्या सोचता है कि वो 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड में उस प्रिजन के अंदर रहेगा, तो क्या होगा, जब तक ठंडी खत्म हो जाएगी और गर्मी आ जाएगी। सोपी को पता था कि वो टाइम आ चुका है जब ये पार्क के ऊपर नहीं रह सकता है, क्योंकि इसने लास्ट नाइट, मतलब जो रात गुजर चुकी है, जब ये उस बेंच पे, पार्क की उस बेंच पे सो रहा था, तब इसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। क्योंकि देखो ठंडी में वो बेंचेस चाहे लकड़े की हो या स्टील की हो, बेंचेस ठंडी हो जाती है। तो इसने क्या किया था, अपने सर के नीचे एक न्यूज़पेपर रखा था, पैर के नीचे और अपने ऊपर भी एक न्यूज़पेपर रखा था। बट उसके बाद भी क्या हुआ, इसको ठंडी लगना कम नहीं हुआ। इसके दिमाग में एक और आइडिया आता है, ये क्या सोचता है कि चलो ठीक है, अब ठंडी आ गई है, कल मैंने देख लिया अपने न्यूज़पेपर ओढ़ के भी, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ, इसको ठंडी नहीं मिली, न्यूज़पेपर ने इसको ठंड से नहीं बचा पाया। तो ये क्या सोचता है, क्यों ना मैं किसी चैरिटी के पास चला जाऊं, मतलब वो फाउंडेशन रहते हैं ना, जो गरीब रहते हैं उनको कंबल देते हैं, घर देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, घर तो नहीं, रहने के लिए जगह देते हैं, प्लेस देते हैं। तो ये क्या सोचता है
क्यों ना ये उनके पास चला जाए और उनके पास रहने लगे। लेकिन सोपी क्या सोचता है कि देखो मैं उनके पास चला तो जाऊंगा, वो मुझे रहने के लिए जगह भी दे देंगे, अच्छा खाना भी देंगे, मुझे रखेंगे भी अच्छे से, बट एक चीज़ है जो वहाँ पर मेरे साथ होगी। आई थिंक सो आप लोगों ने भी ये चीज़ अज्यूम या इमेजिन की होगी या आपके साथ हुई होगी कि आप कभी भी अगर किसी से एहसान लेते हो, मतलब आप किसी से भी हेल्प लेते हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने लगते हैं। तो सोपी भी यही सोचता है कि अगर मैं उनसे हेल्प लूँगा तो क्या होगा, वो लोग मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने लगेंगे। उन लोगों को ये चाहिए रहेगा, वो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन करने लगेंगे। अरे आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में कौन है, आप होमलेस क्यों हो, आप इससे पहले क्या कर रहे थे, आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी ऐसे क्यों हो। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, जिस वजह से सोपी को क्या सोचता है वो कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसे। हाँ ठीक है, आप मेरी हेल्प कर रहे हो, बट आप मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकते हो, आपका हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में बोलने का। आपने मेरी हेल्प कर दी, बहुत अच्छी बात है, दैट यू हेल्प मी, बट यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं आती कि आप मुझे क्या कर सको, मेरी पर्सनल लाइफ में घुस सको। तो इसीलिए वो क्या सोचता है कि ब्लैकवेल जो है, ब्लैकवेल प्रिजन जो है, ब्लैकवेल प्रिजन वो उसके लिए बेस्ट जगह है। क्यों उसके लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि वहाँ पर जो भी पुलिसमैन है वो उसको कैसे रखेंगे, एज अ गेस्ट की तरह रखेंगे। कैसे रखेंगे, एज अ गेस्ट की तरह। हम जब किसी के घर जाते हैं तो वो कैसे हमको खाना खिलाते हैं, हमको अच्छा बिस्तर देते हैं, बट वो हमसे सवाल जवाब नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर आता है कि वो दिमाग में सोचता है कि अगर मैं प्रिजन में चला जाऊँगा तो वहाँ के जितने भी कॉप्स हैं वो मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसेंगे, मेरे से पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेंगे, या मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में उनको कोई वो नहीं होगा गॉसिप, चलो इससे आज जाके बात करेंगे। प्लस वो उसको सिक्योरिटी भी देंगे कि कोई उसको परेशान ना करे। तो सबसे पहले जो हमारा सोपी है वो क्या सोचता है, मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, रेस्टोरेंट में जाके अच्छे से मस्त एकदम डिनर विनर खा के और वहाँ से मैं निकल जाऊंगा बिना पैसे दिए। तो वहाँ के जो भी रेस्टोरेंट ओनर होंगे या सर्वेंट्स होंगे या मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, वो सोपी के लिए पुलिस बुलाएगा और सोपी कहाँ चला जाएगा, पुलिस में चला जाएगा। तो वो एकदम अपना पूरा है ना आइडिया सोच लेता है, अच्छे से अपने दिमाग में पूरा आइडिया वाइडिया बिठा लेता है कि हाँ मैं पहले ऐसे करूँगा, एक प्लान बना लेता है। अब प्लान बनाने के फ़ौरन बाद सोपी क्या करता है, चलना स्टार्ट कर देता है और वो कहाँ जाता है, ब्रॉडवे में चलने लगता है, फिफ्थ एवेन्यू की तरफ। अब जैसे ही वो एक वहाँ पहुँचता है, एक रेस्टोरेंट के सामने पहुँचता है, तो वो क्या करता है, वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने लगता है और वो अपने आप को देखता है कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाने से पहले, वो अपने आप को पूरा देखता है, अपने पूरे अटायर को देखता है कि उसका फेस कैसा है। तो वो क्या था, एक जेंटलमैन लग रहा था। लेकिन वो जेंटलमैन कैसे लग रहा था, उसने क्लीन शेव रखा था, मतलब उसकी दाढ़ी नहीं थी तो उसका फेस अच्छा लग रहा था। उसने एक अच्छा कोट पहना था, मतलब कि उसने कपड़े अच्छे पहना था ऊपर की तरफ, मतलब कि उसका जो लेग्स का सेक्शन था, लोअर सेक्शन था, वो अच्छा नहीं था। वो अच्छा क्यों नहीं था, क्योंकि उसके अपर सेक्शन में दाढ़ी अच्छी थी, बाल अच्छे से बने हुए थे, उसने एक कोट पहना था और एक अच्छी टाई पहनी थी। मगर जो उसका लोअर सेक्शन था, उसकी पैंट फटी हुई थी, जूते फटे हुए थे, पैंट पे मतलब ग्रीस लगी हुई थी, ग्रीस इन द सेंस उसकी अपने नहीं कपड़ों पे रिंकल्स रहते हैं, वो रिंकल्स थे उसके पैंट पे। और उसके शूज़ कैसे थे, फटे हुए थे, जिसकी वजह से वो सोच रहा था कि चलो मैं एक बार अगर मैं टेबल पे जाकर बैठ जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे जो फटे हुए कपड़े हैं वो कोई नहीं देख पाएगा, ऊपर का ही सेक्शन दिखेगा, तो मैं कैसे रहूँगा, एकदम अच्छे से कर लूँगा। अब जो हमारा ये सोपी है, इसके माइंड में खाने आने लगते हैं, ये सोचता है, इसके मुंह में पानी आने लगता है। अरे वाह, जैसे आप लोगों की नहीं मम्मी बनाती है बिरयानी और आपके मुंह में पानी आने लगता है कि अरे मम्मी ने आज बिरयानी बनाई होगी सोचते ही वैसे ही सोपी अपने माइंड में ये सोचने लगता है कि वो क्या क्या मंगाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो वो ऑर्डर करने का सोचता है वो है रोस्टेड मेलरेड डक। वो एक डक ऑर्डर करने का सोचता है, रोस्टेड। फिर उसके बाद वो कैम्बरेड, मतलब वो बहुत सारी डिशेस के नाम अपने दिमाग में सोचने लगता है और वो ये सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा मतलब और ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें ऑर्डर नहीं करूँगा। पता चला वो लोगों ने पुलिस बुलाने से ज़्यादा इसको मारना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स आएगी, यही प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। बट इसको क्या करना है, इसको सिर्फ 3 मंथ्स के लिए जेल में जाना है। सो इसीलिए व्हाट ही इज़ डूइंग, ये सोचता है कि मैं उतना ही ऑर्डर करूँगा जिससे ये जेल में जा सके। अब सोपी की डिज़ायर जो रहती है वो एकदम अच्छा खाना खाने की रहती है, प्लस प्रिजन में भी जाने की रहती है, जो इसको एज अ विंटर होम लगता है। विंटर होम क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर इसको सभी सुविधाएं मिल जाएगी।
अब जैसे ही सोफी अपना एक पैर अंदर रखता है, वहाँ का जो हेड वेटर क्या करता है, सोफी का हाथ पकड़ता है और उसको बाहर ले आता है, उससे क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट से सोफी को बाहर ले आता है। और उसका पहला प्लान क्या होता है, फेल हो जाता है। वो उसको क्या करता है, उसको वहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर आने के लायक के नहीं हो। और क्यों नहीं हो, क्योंकि वो बहुत ही एक हाई रेस्टोरेंट है और वहाँ पे आने के लिए आपके ड्रेस कोड भी वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि देखो अमीर लोग जाते हैं तो वो लोग अच्छे खासे थ्री पीस कोट या तो फिर वो लुई विटॉन ये सारी चीज़ें पहन कर जाते हैं। अब ये क्या करता है, अब इसने अपने दिमाग में सेकेंड आइडिया बना लिया है। अब उसका वो सेकेंड आइडिया क्या है, ये वहीं से थोड़ा आगे चलता रहता है। जब उसका पहला वो कैंसिल हो जाता है तो और सोपी देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा ग्लास का विंडो है। तो अब सोपी क्या करता है, सोपी एक पत्थर लेता है, पत्थर उठाता है और उस ग्लास विंडो के ऊपर खींच के मारता है। अब जैसे ही सोपी वो पत्थर मारता है, वो जो पूरी दीवार, वो जो कांच का पूरा ग्लास रहता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो सब भागते हुए आते हैं और वो सब देखने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो अब वहाँ पर एक पुलिस वाला भी करीब में रहता है। तो पुलिस वाला क्या करता है, पुलिस वाला भी भागकर यहाँ पे आता है और वो सोफी से पूछता है, वेयर इज द मैन दैट डिड दैट। सोफी से वो क्वेश्चन करता है कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये यहाँ पे पत्थर मारा, इस ग्लास को तोड़ दिया। तो सोफी पलट के बोलता है, क्या तुमको ये नहीं लगता क्या मैं ही वो आदमी हूँ जिसने ये ग्लास तोड़ा होगा। तो जो पुलिसमैन है वो सोचता है कि जो आदमी क्राइम करता है वो कभी रुकता नहीं है, वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। तो अब अगर सोपी वहाँ से भागा नहीं है, सोपी वहीं पे है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, सोपी ने वो क्राइम नहीं किया है। अब बेचारे की किस्मत, वहाँ से एक आदमी टैक्सी के लिए पीछे भागता रहता है या कार के पीछे भागता रहता है। तो पुलिसमैन उसको देखता है, पुलिसमैन सोचता है अरे सोपी तो यहाँ पे एकदम चुपचाप खड़ा है, वो जो दूसरा बंदा है जो कार के पीछे भाग रहा है वही चोर है। और पुलिसमैन क्या करता है, सोपी को छोड़ देता है और वो उस आदमी के पीछे भागने लगता है। अब क्या होता है, सोपी का ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है चोरी करने का। तो अब नेक्स्ट ये क्या करता है, ये थोड़ा सा आगे जाता है। फिर नेक्स्ट सीन जो है वो एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट का है, मतलब कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम और आप जा सकते हैं। अब सोपी क्या सोचता है, चलो भैया हाई क्लास में तो जाके मैंने देख लिया, हाई क्लास में क्या था, देखो यहाँ पे डिफरेंसेस भी बताया गया है कपड़ों को लेकर और मेंटालिटी को लेकर। अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो आपको हाई क्लास रेस्टोरेंट में नहीं एंटर करने दिया जाएगा। बट ये जो ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट था, यहाँ पे किसी को नहीं पड़ी आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप कैसे तरीके से आए हो, बस ऐसा है आप खाओ और आप जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना ये आता है अपना सोपी यहाँ पे आता है, मस्त अपना अच्छे से खाना पीना खाता है। और जैसे ही वेटर बिल लेकर आता है तो सोपी क्या बोलता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब तुम जल्दी जाओ और पुलिस वाले को कॉल करो और पुलिस वाले को बुलाओ, एक जेंटलमैन को आप वेट मत कराओ जेल जाने से। तो वेटर क्या करता है, वेटर बोलता है भैया देखो हमारे पास इतना फोकट टाइम नहीं है कि हम पुलिस वाले को कॉल करेंगे, वो लोग आएंगे, हम आपको उनको सौंपेंगे, तब तक आपके ऊपर ध्यान रखेंगे। इससे अच्छा वेटर क्या करता है, एक और वेटर को बुलाता है, सोपी को पकड़ता है और सोपी को पकड़ के सीधे दरवाजे के बाहर फेंक देता है। अब सोपी डायरेक्ट मुंह के बल गिरता है, उसके पूरे मुंह पे मिट्टी, कपड़ों पे मिट्टी। तो सोपी क्या करता है, अपने पूरे कपड़ों को अच्छे से झाड़ता है एक एक तरह से, मतलब जैसे नहीं वो कार्टून में देखे हो टॉम एंड जेरी, जेरी या टॉम के ऊपर कुछ गिर जाता है तो वो लोग चिपक जाते हैं, फिर एक एक करके वो अपने बॉडी के पार्ट्स उठाते हैं। वैसे ही यहाँ पे सोपी कभी अपना हाथ उठा रहा है ज़मीन से, कभी पैर उठा रहा है और फिर एंड में वो खुद भी उड़ जाता है। अब इसके बाद वहाँ पे जो पुलिसमैन खड़ा रहता है ना, वो सोपी के ऊपर बहुत ज़ोर से हंसता है और सोपी को देखता है और वो हंसने लगता है और वहाँ से वो चला जाता है। अब सोपी वहाँ से चल के थोड़ा और आगे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग चल रहे हैं, हवा आ रही है, बहुत अच्छे से कोट वगैरह पहनकर वो लोग चल रहे हैं। तो सोफी ने क्या नोटिस किया कि एक पुलिसमैन है जो कॉर्नर पे ही खड़ा हुआ है। तो सोफी उसको देखने के बाद है ना कुछ देर सोचता है और वो क्या करता है, वो अपने दिमाग में एक आइडिया लेके आता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ खड़े होके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा और चिल्ला के मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा बिहेव करूँगा जैसे मैंने बहुत ज़्यादा दारू पी लिया है और अब मैं जाकर फुल वो ना एकदम दारू पी के मैं बस झगड़े करने वाला हूँ। तो पुलिस वाला इसको देखने लगता है, जैसे ये चिल्लाना स्टार्ट करता है और ये एकदम अजीबोगरीब डांस करने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही पुलिस वाला इसको देखता है,
सोपी की किस्मत एकदम ही बोलते हैं ना घटिया थी वो टाइम पे, क्योंकि जिस एरिया में जाके सोपी ये सब कर रहा था ना, वहाँ पे ना एक कॉलेज टीम, मतलब कॉलेजेस जो रहते हैं ना वो लोग आपस में फुटबॉल मैचेस वगैरह कुछ खेलते होंगे, खेलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत बार आपने देखे हो इंटर कॉलेजेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे फुटबॉल मैचेस खेली जाती है। तो सोपी का क्या रहता है, सोपी जिस एरिया में जाके चिल्ला रहा रहता है, अल्कोहल ऐसा अल्कोहलिक बिहेव करता है, वहीं पे कुछ मतलब उसी दिन एक फुटबॉल मैच हुआ था जहाँ पे जो कॉलेज टीम थी वो जीत गई थी। और वहाँ पे क्या हुआ था, जो बड़े अथॉरिटीज़ थे, मतलब जो हायर ऑफिशियल्स थे पुलिस में, उन लोगों ने क्या बोला था कि वहाँ पर जो भी वो टीम के बच्चे हैं या उनको पसंद करने वाले हैं, उनको लाइक करने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, अगर वो थोड़ी देर रोड पे खड़े होकर चिल्ला भी रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं वो फुटबॉल मैच के विनर्स के लिए, तो आप लोग उनको पकड़ना मत, और आप लोग उनको क्या करना, जेल वेल में मत डालना या पनिश नहीं करना। और यहाँ पे सोपी क्या सोच रहा है कि मेरे को ये लोग अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ और मैं क्या बन रहा हूँ, एक अल्कोहलिक की तरह बिहेव कर रहा हूँ अजीबोगरीब डांस करके। बट क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लोग पुलिस वाले एकदम हंसते हैं, चिल रहते हैं कि चलो ये इनको सेलिब्रेट करना है, इनको करने दो। अब जब सोपी देखता है कुछ हो ही नहीं रहा है तो वो और आगे चला जाता है। अब एक है ना दुकान रहती है, एक शॉप रहती है जहाँ पे लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह ख़रीदते रहते हैं। तो वो देखता है कि एक आदमी है ना शॉप में एंटर हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो अम्ब्रेला बंद कर कर अपने साइड में रख देता है और वो न्यूज़पेपर लेने लगता है। तो सोपी भैया का दिमाग बोले अब हम चोरी करेंगे। सोफ़ी जाता है चुपचाप से और उसकी अम्ब्रेला उठाता है, अम्ब्रेला खोलता है और वहाँ से निकल जाता है एकदम स्लोली स्लोली चल के। वो स्लोली इसलिए चलता है क्योंकि उसको ये था कि ये मुझे रोके जिसकी अम्ब्रेला थी, और वो क्या करे, वो पुलिस को बुला ले। अब ऐसे ही वो आदमी फ़ौरन देख लेता है अरे उसका छाता गायब है, वो सोफ़ी के पीछे भागने लगता है और सोफ़ी को बोलता है भैया ये अम्ब्रेला कहाँ लेकर जा रहे हो, ये अम्ब्रेला तो मेरी है। तो सोफ़ी एकदम गुस्से में एकदम एरोगेंटली बोलता है अगर तुम्हारी छतरी है जाके पुलिस वाले को कंप्लेन कर दो मेरे बारे में, अगर पुलिस वाला आएगा तो ही मैं दूंगा। और हाँ तुम सुनो, वो आगे ना थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, ऐसा सोफी बोलता है। तो वो अम्ब्रेला जिसकी थी ना वो क्या बोलता है, अच्छा ठीक है तुम ये अम्ब्रेला रख लो, ये अम्ब्रेला वैसे भी मेरी नहीं है, ये अम्ब्रेला मुझे आज सुबह कॉफ़ी शॉप से मिली थी तो मैं लेकर ऐसे ही निकल गया था। अब दूर से पुलिस वाला क्या कर रहा है, दूर से पुलिस वाला खड़े होके इन दोनों को देख रहा है, सोपी को और वो आदमी को, कि ये लोग दोनों कुछ तो बात कर रहे हैं, इन लोगों के अंदर कुछ तो हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है। पुलिस वाला कुछ बोलता नहीं है बट सिर्फ सुनता है, मतलब दूर से खड़ा रह के इनको देखता है। तो सोपी एकदम चिढ़ जाता है कि अरे यार ये क्या हुआ, मैंने इसकी अम्ब्रेला जिस लिए चुराया था ये अब क्या बोल रहे हैं कि इसको भी ये अम्ब्रेला कहीं से मिला था। तो ये क्या करता है, वो आदमी अम्ब्रेला छोड़ के जाने लगता है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है अरे मैं बोल रहा हूँ ना तुम पुलिस के पास जाओ कि मैंने तुम्हारी अम्ब्रेला चुराया हूँ। अब जैसे ही सोपी थोड़ा चिल्लाता है, थोड़ा गुस्सा करता है, वो आदमी जो है वो चुपचाप बिना कुछ बोले क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो डर जाता है कि भाई ये चिल्ला रहे कहीं मार वार ना दे। तो वो जो आदमी है वो क्या करता है, वो अम्ब्रेला वहीं पे छोड़ देता है और वो क्या करता है, वो चला जाता है। अब सोपी देखता है कि भैया यहाँ पे तो पुलिसमैन वाला भी नहीं है, कोई चोर, मतलब उसकी कोई पुलिस वाला सुन भी नहीं रहा है, और पुलिस वाले ने देखा भी कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, तब भी उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसने क्या किया, वो अम्ब्रेला को बहुत ही ज़ोर से एक थोड़े डिस्टेंस के ऊपर फेंक दिया। अब सोफी क्या करता है, अम्ब्रेला को फेंकने के बाद थोड़ा एकदम अपने कंधे झुका के, जैसे कि हम हारने के बाद एकदम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, वो वैसे ही एकदम ढीला होके चलता रहता है। अब जैसे ही वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, वो देखता है कि उसके सामने एक चर्च है। अब चर्च में ना वो देखता है एक रूम है जहाँ पे लाइट जल रही है, और ये चर्च वही चर्च रहता है जहाँ पे हमारा सोफी बचपन में अपनी लाइफ गुजारा था, जहाँ पे सोफ़ी ने अपनी बचपन की लाइफ स्पेंड किया था। अब सोफ़ी सारे अच्छी चीज़ें वो करने लगता है, सोचने लगता है कि अरे मेरे साथ ये हुआ था, मैं इतना अच्छा बच्चा था, मैं बचपन में इतनी अच्छी चीज़ें करता था, जो वहाँ पे फादर्स थी, जो वहाँ पे मदर्स थी, जो भी वो चर्च को संभालने वाले होंगे, वो कितनी अच्छे तरीके से इनसे बात करते थे, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इनको सिखाए थे। लेकिन अब इसकी लाइफ क्या हो गई है, ये फेल्ड हो गया, ये जेल में जाना चाहता है, मतलब ये क्या करना चाहता है, ये अपनी लाइफ में गुनाह करना चाहता है, जबकि इनको सिखाया गया था चर्च में क्या गुनाह करना क्या है, बुरी बात है। मगर अब सोफी क्या कर रहा है, सोफी एक क्राइम करके जेल में जाना चाहता है। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग।
तो वो अब कैसी ज़िंदगी जी रहा है, एक होमलेस पर्सन जो एक पार्क में एक सीट पे बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बस वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही वेस्ट कर रहा है। तो अब सोफी क्या सोचता है, सोफी रात के अंधेरे में चांद की तरफ देखता है और चांद के अंधेरे में जैसे ही वो धीरे धीरे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसने कितने क्राइम किया है, उसने क्या किया है, तो उसको एंथम की आवाज़ आने लगती है। सब्बत एंथम, सब्बत एंथम क्या होता है, सब्बत एंथम का मतलब है एक रिलीजियस सॉन्ग जो मतलब जो गाया जाता है चर्च में, ठीक है। तो वहाँ पे वो जैसे ही वो सुनता है उसके दिमाग में सब कुछ आ जाता है कि अब मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा, मैं एक अच्छा काम करूँगा और मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दूँगा। क्योंकि देखो वो क्या कर रहा था, वो एक ऐसी जगह पे बॉर्न हुआ, ऐसी जगह पे उसकी परवरिश हुई जहाँ पे उसको सब चीज़ें अच्छी अच्छी सिखाई गई। लेकिन जैसे ही उसने वो जगह को छोड़ा, वो क्या करने लगा, बुरे काम करने लगा। वहाँ से निकलने के बाद शायद वो एक अच्छा आदमी बन सकता था जॉब वॉब करके, बट वो क्या कर रहा है, अभी वो यंग है लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है, वो एक पार्क में एक बेंच के ऊपर सोता है और अभी ठंडी आ रही है तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो एक क्राइम करके जेल में जाना चाहता है, या तो वो कुछ चोरी करके जेल में जाना चाहता है या किसी का नुकसान करके या किसी का खाना खा के वो जेल में जाना चाहता है। तो वो ये सोच ही रहा होता है अपने मन में और वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को चेंज करूँगा, मैं अपनी लाइफ को पूरा बदल दूंगा। वो एक नई जॉब ढूंढेगा और वो एक क्या बनेगा, एक नया आदमी बनेगा। और वो क्या करता है, वो सोचता है, उसको रिकॉल होता है कि एक दिन एक आदमी उसके पास आया था और उसने इसको जॉब ऑफर की थी। लेकिन वो फिर ये सोचने लगता है, अरे उसको तो इतना टाइम हो गया है, क्या वो आदमी अभी वहाँ पर होगा, या इतने सारे आदमी में से मैं उसी आदमी को कैसे ढूंढूंगा, और जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं एक अच्छा आदमी बन जाऊंगा, फिर मुझे ठंडी के लिए प्रिजन भी नहीं जाना पड़ेगा। अब देखो सोपी की लाइफ कैसे चेंज होती है। यहाँ पे वो अपने दिमाग में सोच रहा है क्या वो एक अच्छा आदमी बनेगा, मगर जैसे ही वो ये सोचता रहता है, पीछे से एक पुलिस वाला आ जाता है और इसके कंधे पे हाथ रखता है और इसके कंधे पे हाथ रख के बोलने लगता है, ओए बता यहाँ पे क्या कर रहा है तू। तो सोपी बोलता है, कुछ भी नहीं, मैं बस यहाँ पे खड़ा था, कुछ सोच रहा था। तो पुलिस वाला बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तेरे ऊपर शक है, तू यहाँ पे कुछ तो कांड करने आया है, कुछ तो गड़बड़ है। वो एसीपी प्रद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है दया, वैसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नहीं सर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं सच्ची में यहाँ पर बस खड़ा था और सोच रहा था। अब जैसे जैसे बात होने लगती है, देखो कन्वर्सेशन में हमेशा ये होता है, जैसे जैसे कन्वर्सेशन होती है ना वैसे वैसे थोड़ी मतलब है ना एकदम गुस्से वाला माहौल क्रिएट हो जाता है, वो कुछ बोलता है फिर ये कुछ बोलता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, सोपी है ना पुलिस वाले के साथ थोड़ा सा गुस्से में बात कर देता है ऊंची आवाज़ में। तो पुलिस वाला क्या बोलता है, चल भैया पीछे घूम जा, तेरे हाथ घुमा, हथकड़ी लगाता है उसके हाथों पे और सोफी को क्या करता है, अगले दिन जज के सामने पेश कर देता है। और जज क्या करता है, जज बोलता है चलो भाई 3 महीने के लिए तुमको सज़ा दे रहा हूँ मैं, ब्लैकवेल आइलैंड जहाँ पे इसको जाना था इसको वहीं पर सज़ा मिल गई है। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है सोपी के जेल में जाने से। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये चैप्टर समझ में आया होगा, मैं ये विश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर कोई आपके दोस्त हैं जो आपकी तरह लिटरेचर लवर्स हैं या वो 12th में हैं, तो उनके साथ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन दबा देना, ताकि आप जितने भी बच्चे हो कोई भी आप मेरा वीडियो मिस ना करो और आप अच्छे से समझो। इफ़ यू वांट, मुझे कोई और चैप्टर समझाना चाहिए, पोएम समझाना चाहिए, एंड इफ़ यू वांट इट, सो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Ali's English Academy. My name is Ali and today we are going to explore the story The Cop and the Anthem. The Cop and the Anthem is a short story written by O. Henry. The story is about Soapy, a homeless man, and he is the protagonist of the story. The first scene takes place at Madison Square. Soapy was sitting in the park and seemed to be moving restlessly on his seat. There were a few signs in the surroundings representing that the winter season was arriving. They were the migration of birds from one location to another in search of food and shelter. People's need for a new coats
and sweaters to keep them warm. And also, Soapy moved here and there restlessly on his seat. While seeing all the indication, one can understand the winter season was coming nearer. When Soapy was sitting on the bench, he noticed a dried leaf falling at his feet. It was a unique sign that indicates the seasonal change. When he spotted the dried leaf, he assumed it was sending a message about the winter season. So Soapy thought it was time for all the people in Madison Square to face the upcoming winter. They had to be ready with the necessary items such as woolen clothes, sweaters, boots, and blankets to keep them warm. Being a homeless man, Soapy had stayed in the park for several nights, but Soapy mind understood the fact that the time had come for him to leave the park and a better place to stay. He knew that he wouldn't be able to manage the chillness produced by the cool climate if he remained in the park during the winter season. So Soapy had to find a new place to take care of himself during the winter. This was the reason behind Soapy's restlessness. So he moved here and there on his seat. Soapy only had a few hopes in his mind, and his expectations were low for winter. On the other hand, the New York people planned to visit the warmer places during the winter season. But Soapy was quite different. He knew he couldn't expect anything more. He was not thinking of sailing away on a ship, visiting the warmer places, or even traveling to the Bay of Naples during the winter season. All he wanted was 3 months of stay in prison. The winter season would remain for almost 3 months. Hence, he preferred to stay in prison for 3 months until the winter gets over. The best thing Soapy wanted in his life was 3 months of stay in prison for every day and 3 months of protection from the bitter north wind and police officers. The rich people of New York City had numerous plans for the winter season. They made their plans to visit Florida or shore of the Mediterranean Sea. Soapy, on the other hand, had his plans to go to prison. The lives of wealthy New Yorkers and Soapy's are compared here to indicate the rich people wanted to enjoy the gorgeous location, while Soapy's goal was to reach the prison. During the winter season, Blackwell's Island was his pleasant home. So while the rest of the New Yorkers were preparing for the winter vacations, Soapy was making plans to return to the jail. Soapy knew that the time had arrived of leaving the park because on the previous night Soapy felt very cold while lying on the bench. So he placed three newspapers underneath his coat, beneath his ankle and over his leg to remain warm. The idea, however, did not go as planned. The newspapers did not keep him warm during the night in the park. The chillness made him think of Blackwell Island because he would get a bed, nice sleep if he were there. Aware that the city had certain facilities, charities for helping homeless individuals. If he went there, they would feed him, give him a bed, and look after him for rest of the winter. But above all, Soapy preferred to remain in prison because he felt very comfortable in prison when compared to other places. Soapy was proud of himself because if he stayed at any of the places, such as charities, he had to pay for it somehow. Paying in the sense was not in the form of money, but rather in obeying the charity people's direction. Soapy had to respond to the questions posted by the individuals who had sheltered him, and he was occasionally questioned about his personal life as well. Soapy, on the other hand, was not fond of accepting help. According to Soapy, those who give charity have the right to intrude on one's privacy.
People might support him out of pity at first, and later they would be highly interested in learning about someone's personal life. Sophie ultimately realized that no place would be better than Blackwell's prison. After forecasting everything in his mind, Soapy, on the other hand, preferred to be a guest in prison. The cops never get involved in the private life of guests like Soapy. The prison had a few rules, and Soapy had to follow that. He thought that his dignity could be preserved only in jail. He wanted to restore his freedom by being in prison. Therefore, Soapy decided to do something annoying to get himself arrested by the cops. Soapy liked to spend winter season in Blackwell Island. However, he had to commit an offense to get to the prison. As a result, the cop would arrest him and send him to jail. Soapy believed that there were numerous simple ways to get caught by the cops. So Soapy thought of a plan and the way to execute it. At first, Soapy thought of going to a high class restaurant for dinner. Then he would order the most delicious food from the restaurant. And later, and later, he would say that he had no money to pay the bill. At last, probably the restaurant owner or someone would call the police to arrest him. Later, the policeman would arrive at the spot to catch Soapy. Then he would be sent before the judge. The judge would take the decision to imprison Soapy. These were the things assumed and expected by Soapy. He was waiting for the moments to happen gradually. After formulating the plan, Soapy got up from his seat and slowly walked out of the part. Later, he gradually moved towards the place where Broadway and Fifth Avenue meet each other. He walked a long distance and finally reached the north side of Broadway. Finally, his eyes caught sight of a brightly lit restaurant. He stopped in front of the restaurant. It was a high class restaurant. Outside the restaurant, the light sets were hung. The most delicious food were cooked and served to the guests in this restaurant. Every evening, a large number of wealthy people could be found in the restaurant. They would dress up gradually and enjoy the night with a delicious dinner. Soapy thought of executing his first plan. The following scene takes place in front of a high class restaurant. Soapy most likely thought he could cheat the restaurant staff by giving them the appearance of a gentleman. Sophie thought that he looked right above his legs. He had a neatly shaved face, wore a good coat and a decent tie. Having confidence in his appearance, Soapy imagined a lavish meal ready for him. As it was a busy restaurant, Sophie thought that if he could get a table, the success would be his. He believed that he would appear great when he sat at a table. It meant that his upper clothing gave him the appearance of a gentleman, but his lower clothing gave him the impression of a poor man because he was wearing broken shoes and torn pants. Later, he imagined that he would order a delicious dinner if he could get a seat, and the waiter would bring him what he asked for. Soapy was assuming everything in his mind by standing outside the hotel, like what food to order. He could see the whole dinner in his mind. He thought of ordering food like a roasted Malrod duck, camembert, and a demi tessie. Here, Soapy decided to eat well, but not so expensive as to raise suspicion or make hotel management to take severe action, but just enough to get him arrested by a cop as planned. Soapy's desire was not only to enjoy a wonderful meal, but also the way for going to prison. If his wish became true and his plan get succeed, it would be easily pave the way for his journey to his winter home.
Having decided to enter the restaurant, Soapy put his foot inside the restaurant door. At that time, the head waiter standing near the door saw Soapy's broken shoe and torn clothes covering his leg. Immediately, he was sent out of the restaurant by the strong and ready hands. The phrase strong and ready hands meant that the head waiter moved Soapy immediately out of the restaurant without letting him in. The head waiter silently turned Soapy and quickly moved him out. The tattered shoes and damaged clothing reflected Soapy's reality in front of the head waiter. At last, his first plan had flopped, failed. After his first effort to enter the jail was unsuccessful, Soapy left Broadway. He believed that his most easy way to reach the Blackwell's Island was not to be his. So he must think of another plan to reach the prison. The following scene takes place in front of a shop. Soapy noticed a shop on the corner on 6th Avenue. It was a shop that sold glass plates. A large glass window with strong electric lighting made the glass objects appear to be appealing. On seeing that, he had a sudden idea. He walked over to the shop, grabbed a cobblestone, and threw it through the glass window. Later, because of the force of the stone, the window glass shattered. People hurried towards the shop. When they saw it, as a result, the first person to arrive at the crime spot was a police officer. Soapy smiled when he saw the policeman and stood still because he was happy to see the cop and thought that very soon he would be arrested by him. This was the most awaited moment of Soapy. The policeman came forward and asked, "Where is the man that did that?" At that time, Soapy said, "Don't you think that I might have done it?" Soapy spoke to the police officer in a happy and friendly way because he had done everything for a purpose and the things were happening as per his plan. He wished for the officer to take him into custody. To his misfortune, the police officer never doubted him and expected him as the culprit. The policeman thought that the man who committed mistakes wouldn't stand in front of him and accept their mistakes. He would try to escape from the place. Meanwhile, the policeman saw a man running along the street to catch a car. He thought the man who was running was the real culprit. The policeman ran after the man to catch him. Soapy never expected his second plan would go wrong. He was upset and felt helpless. He started to walk in a depressed state. Finally, Soapy got failed in his second attempt too. The next scene takes place in front of an ordinary restaurant. Soapy saw a restaurant across the street. The street was not as large as the former Broadway high class restaurant. This was a local restaurant with reasonable priced dishes for middle class people. Furthermore, the food in that restaurant was not as good as it had been in the previous restaurant. As it was an ordinary restaurant, he stepped inside the restaurant with his damaged shoes and torn clothes. After seeing his dress, no one stopped him. While reading the story, one can distinguish the two types of restaurants into which Soapy visited. The person's look was valued in the first restaurant, therefore, he was sent away. On the other hand, when he stepped inside the ordinary hotel, no one bothered about his appearance. Soapy sat down at a table and ordered a big dinner. He ate beefsteaks, flapjacks, and donuts. When he finished his dinner, he told the waiter that he had no money to pay the bill. Soapy told the waiter to call the police immediately for cheating them. Soapy also started, sorry, Soapy also stated, "And don't keep a gentleman waiting," implying that he wanted them to hand him over to a cop immediately. The waiter said calling a cop was unnecessary and he called another waiter to accompany him.
The two waiters threw Soapy outside. Soapy's left ear hit the pavement when he fell on the road. Soapy carefully rose up, one section of his body at a time, and brushed the dust off his clothes. For him, prison seemed like a wonderful dream, but the island appeared to be a long way from him. The statement does not refer to the distance, but it does imply that getting into the jail was difficult because he had failed in his third attempt. A policeman was standing near, laughed at him, and walked away without saying anything to him. Soapy continued to walk after that. He eventually stopped walking. At that time, Soapy was standing near several movie theaters. In comparison to the previous areas he had been in, he noticed that the particular streets of the city appeared to be brighter and the people seemed to be having a good time. Women and men dressed in grand warm coats and moved merrily through the winter air. At that time, Soapy was taken aback by a sudden fear. He was afraid that no police officer would arrest him, and so he could not reach the winter home. Soapy then noticed another police officer standing in front of a big theater and moved closer to him. He thought of trying a new plan. Soapy believed that if he broke any laws, the officer would catch him right away. This was the reason behind Soapy standing near a cop. Suddenly, Soapy got an idea to execute his fourth plan. He began to shout as if he had drunk too much alcohol. To seek the attention of the cop, Soapy raised his voice as much as he could. He danced and yelled out loudly. He planned to create trouble and get caught by the police. But the policeman stopped looking at Soapy and said to a man standing near him as, "It's one of those college boys." The boys were from Yale's College, which had recently defeated Hartford College in a football game. The college students were dancing and making loud noises to celebrate their victory. According to the officer, these people will shout louder and will not injure anyone else. The cop also stated that they had received orders from higher ranking authorities to allow them to enjoy. Unfortunately, the cop had misunderstood Soapy as a college student, so he did not arrest him. Even after making louder noises, the cop never minded him. So Soapy remained silent. Soapy thought to himself that was no cop going to touch him? Soapy began to imagine the island as it were as far as a star. He compared the island to a star that seemed to be far away from him. The stars are miles away from the earth. Likewise, the island appeared be far away from him. However, if he commits a crime, he will be very close to it. Later, he felt very cold as the cool breeze touched him. So he pulled his tiny coat around him. The next scene takes place in front of a shop. Soapy then noticed a man in the shop buying a newspaper. The man kept his umbrella beside the door. Once seeing the umbrella, Soapy thought of a plan. So he entered the shop and took the umbrella and walked slowly away from there. But when the man noticed Soapy stealing his umbrella, he followed him. The man approached Soapy and said that the umbrella was his. Soapy immediately answered that if it was his umbrella, he could report it to the police. Soapy also acknowledged that he had taken the umbrella and asked, "Why don't you call a cop?" Soapy's intention was to make the man angry, and so he could plan to complain to the cop. Soapy also told him that a cop was standing at the corner. This was the another way of conveying him to call a cop. When the umbrella man saw the cop, he walked very slowly. Soapy also walked very slowly as the man did because he was worried that whether his plan would fail again. Soapy had the inner feeling that he was about to fail once more. However, a cop was standing nearby and watched the activities of the two men.
The umbrella was Swiftfield disclosed his truth to Soapy when a police officer observed the argument. He explained that he had found the umbrella in a restaurant earlier in the morning. He also stated that he was not the owner of the umbrella. The umbrella man said to Soapy, "If you saw, it's yours. I hope you will." On hearing that, Soapy exploded in anger and said that the umbrella was his. Soapy never expected that the man would tell him it wasn't his umbrella. Soapy's main intention was that the umbrella owner would argue with him to finalize it was his umbrella. However, things became twisted and the man told him he had to got it from somewhere. At last, Soapy felt lost and dejected. His fifth strategy also got failed. When Soapy shouted in anger, the umbrella man left the place. The police stopped staring at both of them when the argument was done. Later, the policeman helped a woman in crossing the street. Then Soapy started walking towards the east. Finally, due to anger, Soapy threw the umbrella away as far as he could because whatever plan he had thought had just failed. While walking, Soapy talked to himself about the cops and the things he thought of cops. Soapy thought that the cops would arrest him if he did any wrong. He wished to be captured by the cops several times, but here the cops seemed to believe Soapy was like a king who would not commit any wrong. Soapy became increasingly desperate and furious over his concurrent failed attempts. After trying hard to get caught by the policeman, Soapy's various plans got failed. Finally, he reached one of the quiet streets on the side of the city. He decided to walk south towards Madison Square. He planned many tricks to get caught by the police, but he failed in every attempt. So, in sadness, Soapy thought of going home. As everyone knew, Soapy was a homeless and jobless man. But here, he was going home meant that he was going back to the Madison Square Park. According to him, a seat in the park was only his home. Soapy stopped walking while he saw a quiet corner. There he saw an old church. It was his childhood home. He could see a soft light shining out through one of the windows. The room where light peeped out was his older room. At the same time, while seeing that, Soapy recalled the happy times he had spent in his childhood home. At that moment, Soapy heard a sweet music coming out through the window and it made him stop there. As it was night time, Soapy could see the moon above the sky. The moon seemed peaceful and bright. Few people were passing here and there near the country churchyard. Soapy could hear the chipping sounds of the birds sitting on the edges of the roof. The music made him to stop there, and he had knew it well long ago. The music was nothing but Sabbath anthem. Anthem is a religious song sung by a choir with organ music. The anthem was being played by an organist inside the living room, and Sophie heard that sweet music coming through the window. The anthem made Sophie to think of his past. During his childhood, his life contained many good things like mothers, flowers, high hopes, friends, clean clothes, and even clean thoughts. In our story, The Cop and the Anthem, the term anthem plays an important role because it gave a big transformation in Sophie's spirit. The anthem had made him, the anthem had made a sudden and unexpected changes in his spirit. He recalled the vast transformation that he had in his life. Soapy had gone through a lot of meaningless days, and he had a lot of bad wishes, like getting into the prison by committing a sin. His dead hopes and last power of mind had made him to fall into the pit. While thinking about his bad transformation, his heart had answered him a way to change his life. It instructed him to fight to change his life. Her fight doesn't mean violence,
It speaks about the hard work. If a person works hard, he would come upon in his life. Soapy would pull himself out from the mud. Here, mud implies the wrong desires, wrong hopes, and wrong intention he had in his life. Soapy would come out from his worst part of the life and would start a new life. Because of the music, he decided that he wanted to be a good person in his life. Soapy thought that there were enough time for him to change himself. After all, he was a young man and he had many ways to change his life. He thought to himself that the next morning he would find a new job. At that moment, while thinking about the job, Soapy remembered a man who offered him a job once. He thought of meeting the man the next day. Then he thought that if the man gives him the job, he will become somebody in the world. The world seemed very big with lots of people. Among them, he had to find the man for his job. While he was thinking about a new life, Soapy felt a hand on his arm. Soapy turned back and saw the broad face of a cop. The cop asked him that what he was doing here in the night. And Soapy said that it was nothing. The cop asked whether he needs to believe what he said. On hearing that, Soapy started to argue with him and full of new strength. But it was not good to argue with a New York cop. Finally, the cop arrested him. The cop would have arrested Soapy without proper investigation because he believed that Soapy was doing something wrong, or it could be because Soapy had argued with him. The next morning, Soapy was sent before the judge. The judge sentenced him 3 months prison on Blackwell Island. The writer ends the story in irony. When Soapy thought of going to the jail, his destiny did not help him. When he yearned to lead a good life, the life made him to fall down and send him to the prison. This is what life is. What we expect would not happen, and what we did not expect would happen. O. Henry had concluded the story with an unexpected and twisted ending. If you understood the story well, then don't forget to like the video. Please do subscribe to our channel and press the bell icon for more videos like this. Do share it with your friends who are literature lovers like you. Please subscribe to our channel and comment. Please like and share, subscribe. Thank you, and we will meet soon with a new story in the next video.